has specialized in physical chemistry. She has vast experience of training and different workshops. She has been a member of NAAC steering committee for her college and has contributed a resource person to the election commission also, CO office Madhya Pradesh, and was awarded for the best practices. She has been a learner throughout and still continues to be. इस बात की हमें अत्यंत ही प्रसन्नता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के शुभ अवसर पर हमारे प्रथम तकनीकी सत्र का शुभारंभ एक विदुषी, अध्यावसायी, संवेदनशील एवं सशक्त महिला के द्वारा किया जा रहा है। आशा है इनके वक्तव्य और इनके कार्य प्रणाली हम सबके लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करेगी। इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों, खासकर महिला प्रतिभागियों का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। अब मैं भोज विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय से अनुरोध करती हूं कि इस ऑनलाइन माध्यम से इस सत्र की तकनीकी सत्र की स्पीकर का डॉक्टर उषा नायर मैडम का स्वागत करें। आप तो बोलिए। आज के इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशॉप के प्रथम सत्र में हमारे बहुत ही शुभचिंतक हर समय हमारे साथ जुड़कर हमको मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित रहने वाले आदरणीय डॉक्टर उषा के नायर जी का मैं भोज परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज का पहला सत्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ है और पहला सत्र में हमारे संचालक भी महिलाएं हैं और हमारी मुख्य वक्ता भी आज के कार्यक्रम में महिला, ये हमारे लिए गर्व की बात है। भोज विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ 5 दिवस का कार्यशाला निश्चित ही किसी सार्थक परिणाम की ओर हमें ले जाएगा और हम भोज विश्वविद्यालय को पहली बार जो नेक कराने का सपना देख रहे हैं उसमें ये पत्थर मील का पत्थर साबित हो, ऐसे में अपेक्षा करता हूं और आज के तकनीकी सत्र के शुभारंभ के लिए आप सभी से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं इस तकनीकी सत्र के प्रथम तकनीकी सत्र की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर उषा नायर मैडम को आमंत्रित करती हूं अपने सत्र के उद्बोधन के लिए। धन्यवाद मैडम। आप सभी को मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई। It is really a great honor for me to be present for the first session on such a wonderful great day, that is the International Women's Day. I extend my greetings to the women in the organizing team and also the participation group, the people who are participating. I extend my greetings to each and everyone, to all the men also, for supporting us constantly, motivating us and encouraging us in all our endeavors. Thank you so much. We are all aware that today is a very special day. It's International Women's Day. And Hindu mythology में या हम किसी भी धर्म के जो अच्छी बातें हैं उसको पढ़ेंगे तो we can very well comprehend, understand that women are the epitome and embodiments of the cosmic energy of the universe. They symbolize auspiciousness. किसी भी स्थान पर हम जाते हैं वहां अगर महिलाओं की कमी है तो उस जगह की शोभा कम हो जाती है। So महिलाएं जो है they symbolize power, they symbolize energy, positive energy, auspiciousness, and that is what we celebrate today. The womanhood we celebrate on this International Women's Day. A very warm welcome and greetings to each lady, each woman in this group. I'm extremely thankful for inviting me to this first session, a very important session on accreditation, because as Madam ne kaha, Dr. Smita Rajan Madam ne kaha, कि every institution, higher education institution
as per the instructions of the UGC, has to undergo the process of accreditation and achieve at least B grade so that they can avail all the facilities available to the institute for the growth of the institution. So Honorable Vice Chancellor, sir, the entire team of SICA and all participants, I extend my greetings and begin the session. I'll request Madam to kindly permit me to share the screen so that I can speak to you showing my presentation. Thank you, ma'am. Please go ahead. Please go ahead. Yeah, is it visible, Madam? Yes, ma'am, it's perfect. Yes. So today we are going to speak on the quality in higher education and especially on the aspect of accreditation. Now, to begin the session, I have a quote here. We are all faced with a series of great opportunities, brilliantly disguised as impossible situations. Or any impossible situations, we call them as challenges. So they are actually opportunities. So we are all faced with a series of opportunities and we feel that they are challenges. So I begin my session with what are the challenges that we face in quality higher education. The first aspect that comes to my mind are the admissions. Now, according to the All India Survey on Higher Education, AISHE, the reported GER of India for 1920 is 27.1%. 1819 it was 26.3%. It has grown, it has improved a bit. And if we take the GER of today, that is in 21-22, it may be around, it is under calculation, it may be around 29%. So we are improving. But then there are many challenges because like in our state in Madhya Pradesh, the higher education institutions are remotely located. The areas which are very far off, there is a lot of lack of awareness regarding higher education among the people in the villages, in the remote areas of the state. There is lack of motivation. The social background also holds them back in continuing the higher education. There are financial constraints that people are undergoing. So there are many factors which hold people back from pursuing higher education. So this is a big challenge that India is facing, to bring more and more people under the umbrella of higher education and equip them enough to be self-reliant. The next aspect you can see is maintaining quality. We have so many higher education institutions. I think more than 50,000 higher education institutions. To maintain that minimum standard of quality is very difficult. That minimum stringent level, standard levels is very difficult. Government at their level, at different levels, at the state level, at the national level, at the district level of a state, are all trying hard to maintain this quality. Still, there are a number of institutions which are not able to maintain quality, the minimum standard that is required, laid down by UGC. So our institutions and universities are not able to make it to that top level universities of the world.
That is what we have to strive for. And that is where this quality higher education and accreditation is going to play a major part. The next factor as a challenge is the infrastructure and other facilities. Infrastructure, we know that many institutions are lacking in sufficient number of classrooms. They don't have their own building. They don't have hostels. They don't have transport facilities. They don't have even basic amenities like drinking water supply, separate washrooms for boys and girls, separate for the faculty members, for the Divyangjan. They don't have the ICT enabled classrooms, computer labs. There are many such insufficiencies in the facilities infrastructure which we have. In fact, I know of some institutions where the higher education institution is on the second and the third floor, and there are other shops and other things working in the first and the ground floor. So that ambience has to be proper until we give a proper ambience to the children. Unless we create that study environment, learning environment, it is very difficult to achieve the desired results. Then there is lack of research aptitude. We have seen through the research that has happened recently with the spread of the pandemic. So the research culture is lacking. Many institutions in our state, located remotely, have no research facility at all, no culture, no aptitude. The faculty members are not guides. They don't have students enrolled under them. They themselves are not publishing papers, and even if they are publishing, they are not doing it in renowned the journals which are subscribed by the UGC. So then there are money factors also. Funds are not available for the promotion of research work. Funds are not available for the faculty members to attend seminars, workshops, etc., to organize them as well. So there are many constraints in this field as well we are facing. So there is lack of motivation, lack of inspiration, lack of culture, lack of policy. Everything goes in that. Then equity and accessibility. I just said that gender equity, girls are even today, and we are celebrating Women's Day, girls even today are not sent for higher education. They are retained at homes to do the household chores, and they are asked to go to the fields and work. They are asked to go take up work at a very young age in houses as domestic helps. They are not motivated to undertake higher education. Then accessibility also. We have to reach, that is what the main motto of the Open University that the organizing university, it has undertaken. That is to reach the unreached. You are providing them accessibility. That is the greatest, the strongest point, in fact, of this university. So through these challenges, I started saying that we have a number of opportunities disguised as challenges. Then insufficient faculty members. We know in all our institutions, there are so many vacant places. But then even whether it is supporting staff or the faculty members, there are many vacant places which are not being filled due to various reasons. And then there is unemployment, the talent, there is loss of talent also. There are well-qualified people who want to join us as professors, but then at the right time, they don't get that
entry. They are not ushered in at the right time. And so they look for other opportunities and then go to other departments. The governance structure also, there has to be accountability, transparency, professionalism, which is lacking. It is, I'm not saying that it is not there. It is there, but it has to be strengthened. That is why it is a challenge. So many universities have a number of colleges affiliated to them. So they are working like administrative institutions rather than teaching centers, the centers for excellence. So they have, for academics and research, they have no time. They are overburdened with the work of the colleges, affiliated colleges. So autonomy also plays an important part. We must we must go for autonomous institutions so that the universities can also do their work properly. Then there is another challenge I feel is the ICT literacy. We have seen through the pandemic period how important technology is. In fact, we have operated through everything, every activity of all institutions through technology, through ICT. So this literacy is lacking in remote areas, just as research is not there. Similarly, there are no computer labs. There are no internet connections. They are worried about the children coming for classes, how to give them the ICT literacy. They are themselves not literate. So all these points are challenges for us to maintain quality in higher education. Let us now speak on why quality matters. Why is it that quality is so important? Because anything that we go for, हम कोई भी चीज अपने लिए खरीदते हैं, घर हो, कोई सामान हो, कोई भी कार्य हम करते हैं, तो हम उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हैं, क्वालिटी देखते हैं. Higher quality, greater earnings. If our students are qualified, very well qualified, they will earn well. That will lead to the economic growth of the country, the development of the country. The image and reputation of the institution will grow if the quality is maintained. The institution will have a great name. Now, in Madhya Pradesh, we are preparing colleges for NIRF as well. So there is a very important point on peer perception. What is your visibility? How are you known in the society? The peer institutions and do they know you? What is your reputation? So to improve that, quality standards have to be maintained. Even if you achieve a level of quality, a benchmarking, to keep on that, to stay on that, to maintain that also takes a lot of effort. Then, if there is quality, there will be high demand of admissions in your institution. The demand ratio will be very high. Actually, the number of applications would be 10 times or even more than that. So the quality matters a lot. The stakeholders, the society, the parents, the children, the alumni, the students themselves, the faculty members, all will be satisfied. There will be a feeling of, of triumph among them if quality is maintained in the institution. The students will benefit getting dream placements. They will be absorbed immediately as soon as they pass out. I know universities where 100% placements occur and very high package they receive. So this can be done only if we maintain the quality. So if quality matters, then we must understand the quality circle
and quality culture. I'm not going to dwell on this in a very detailed manner, but then just I would like to tell you that this quality circle says that we must act, plan, do, check. So to maintain quality, we must keep evaluating ourselves, implement all that, the lessons learned, modify them as needed, establish baselines, identify priorities, set improvement goals and standards, implement actions, plan to achieve the goal. You have to set some goal. You have to have a strategy and how to go about it. Strategic plan should be there. And what are the items that you have to, how will you, there is a methodology to go about it. And then the monitoring part, monitor, measure, find and fix what is the problem, document it properly, and find the results that you will get. So if you maintain this quality circle, I am sure that we will really achieve that quality which we all are striving for our institutions. So approach, vision, mission, objectives, the plans, the measures that we are going to take in our institution, how we are going to communicate with the stakeholders, how we are going to train them, how we are going to use the resources, how we are going to implement the objectives, plans we have chalked out for our institution. We must have a strategic plan, institutional strategic plan. Where do we see the institution after 5 years, 10 years? So then the next will be a review part. After the training has been done, the implementation is over, the review, monitoring is very important. And that is what happens in accreditation. The data that we collect, the documentation that we do is first analyzed, reviewed by us, by self, and then by peer group. So those learnings, those adaptations, the strategies, mechanisms that we have should be used to improve. So if we go back to this quality circle, you will find that we need a continuous improvement. Only then the quality can be maintained. Here I am reminded of a story. A very strong and skilled woodcutter went to a timber merchant for a job. He got a job with good salary and decent working conditions. The boss gave him an axe, एक कुल्हाड़ी दिया उस woodcutter को, लकड़हारे को, and then he was asked to do the job. The woodcutter went into the forest, and the first day he chopped 15 trees. 15 पेड़ को काट पाया. The boss was very happy. बहुत उसकी तारीफ करी, शाबाशी मिली उसको. और फिर the woodcutter thought that next day I will try even harder. So with the same enthusiasm, motivation, inspiration, he went on the second day. He started working, and this time he saw that he could chop only 13 trees. पहले दिन 15 और आज he could do only 13. He was astonished. Still he thought, कोई बात नहीं, tomorrow I will try harder. So went to the boss and said, आज मैंने 13 trees को काटा है, पेड़ों को काटा है. Then the boss said, okay, very good. This time only very good. The next day again he got ready and then went to the forest with great enthusiasm. Today I'm going to do even more. And he could do only 10. Slowly the number started coming down. He was astonished. मैं तो उतना ही काम कर रहा हूँ, उतने ही जोश में काम कर रहा हूँ. He went to the boss, to the timber merchant, and said, I'm feeling very bad. I apologize that I'm not able to put in the same quality of work that I
began with, the boss said, when did you sharpen your axe? So the woodcutter said, no, I didn't have any time for that. So the boss said that go back and sharpen your axe immediately. So there is continuous improvement is needed. Continuous process has to be there. Most of us do not have the time, the patience to update our skills, knowledge, beliefs. Many of us think and assume that learning ends in school or college. And so sharpening our axe is not needed. This is not the case of one individual that I'm saying. This axe means the whole process, the quality initiatives that we are taking has to be continually improved. Then the learnings from the previous process has to be made, it has to be reviewed, monitored, analyzed, and the learnings have to be implemented for the next endeavor. So this quality culture, you can read, your culture is your brand. So this quality culture is very important because that defines our brand. So this quality culture or initiatives have to be, you can see 6 C's on your screen: continuous, consistent, conscious, ceaseless, catalytic, and committed. It has to be a consistent process, a continuous process. You should be aware of it, conscious, ceaselessly you have to try for it. Catalytic, I'm a professor of chemistry, therefore I like this word very much. It has to be catalytic. You must be the force behind, the driving force behind it, and it has to be committed. So all these C's give you the idea of the quality culture. So next slide, you can see these companies which have their tagline, which says about the whole thing. So if you want your brand to come out well, then you need that quality culture. See, the quality never goes out of style. The ins and outs, they have this tagline, quality you can taste. Another retailer company has, we sell quality, happiness is free for free. So these are the ways in which the quality culture speaks about our brand. And this is where in higher education institutions, the role, the objective of maintaining quality is taken up by accreditation. Accreditation is the process of maintaining quality through self-evaluation and through evaluation by an external agency, a peer group. So excellence, there is a word excellence you can see. So ensuring, enhancing, and sustaining quality is the main objective of accreditation. And quality, we know, is the degree of excellence. Excellence is not something, it's a habit that we have to develop. अपनी जीवन शैली में हमें उसको उतारना होगा. That we have to better every act that we do. Excellence is competing with oneself, not with anyone else. What I have just now done, I'll do it better the next time, even better the next time. That is competing with oneself. The degree of excellence is quality, and that is what accreditation talks about. So NAAC, in its vision statement, says that quality is the defining element of higher education. As I said, NAAC operates
through this process of self-evaluation. The institution evaluates itself, and then also, then it says that it invites people to come and see the institution and the documents that they have prepared for another stamp, so that we are doubly ensured that we have achieved that level of quality. So NAAC keeps on arranging periodic assessment. This is the mission of NAAC. Stimulates academic environment in HEIs, encourages self-evaluation, accountability, autonomy, and innovations in higher education. Constantly, they ask us to innovate, to self-evaluate, bring in new practices, and always that fresh ideas must come in, and then also maintain quality at the same time. Then they also, their mission is to ensure that higher education institutions undertake quality-related research studies, consultancy, and training programs, collaborate with other stakeholders of higher education. This is the vision and mission of NAAC. And they have 5 core values, which you can see on the screen: the national development, global competency, value system, the use of technology, the quest for excellence. So the role of higher education institutions in human resource development. We have a big human resource that we are handling in higher education. We have that responsibility of developing that human resource. Capacity building we have to do to cater to the needs of economy, society, and the country as a whole. The courses and the teaching learning that we do must finally address the social justice, equity, access to higher education. These are the few areas in which the higher education can contribute to national development. Then we have the second factor, that is global competency. In our students, in our institutions, the students must be globally competent. The skill development of the students should be at par with any other counterpart of the student in other countries. So internationally accepted standards are needed. Core competencies to face global competency. Global challenges have to be achieved. So for this, we need collaborations with industries, with other universities of repute, even international universities, and in higher education institutions within the state, within the nation, and outside the nation also, so that we make our children market ready, job oriented, and globally competent to face the challenge once they are out of our institution. Although skill development is very crucial, I'm coming to the next point. Although skill development is very crucial, but very crucial and very important to make them globally competent for national development, but the strengthening the value system is equally important. They should have that spontaneous value behavior in them. India is known for pluralities and diversities. So we have to prepare our children when they step out of our institution into the society at the national level or the global level. They should be
their value system should be so strong as to, understand the cultural, economic, environmental realities. They should be rich in truth and righteousness. Satya और सदाचरण, ये दो ऐसे कोर वैल्यूज हैं, और इसी के साथ शांति, प्रेम और अहिंसा, ऐसे 5 यूनिवर्सल वैल्यूज है। सत्य, सदाचरण, शांति, प्रेम और अहिंसा, ऐसे 5 यूनिवर्सल कोर वैल्यूज हैं जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। जिनको हम क्रिकेट के भगवान कहते हैं, सचिन तेंदुलकर, when he used to play, और एक बॉल पर जब वो आउट होते थे, तो he never waited for the umpire to lift his finger and say and call out that you are out. The moment the ball used to touch his bat and he was out, he used to walk away from the field. That spontaneous value behavior is needed in our children. That is what we have to strengthen in them. The next core value is the use of technology. We have all experienced enough and more that how important technology is. Whether it is the governance part, whether it is the documentation part, whether it is the data management part, website for visibility of our institution, our students, our faculty, our alumni, for everything, for e-governance, whether it is the use of e-resources, everything we need technology. So we have to empower our children with the use of technology, and that is what NAAC sees into. Then the institutions have to develop into centers of excellence. With all the other 4 values, they must have that quest for excellence, to improve continuously, as I said, to sharpen the axe, keep on sharpening, so that I don't miss a single day, a single opportunity to be the best. So for that, the quest for excellence, to develop into centers of excellence in all activities of the higher education institutions, are very important. So what NAAC does is that through accreditation, it assesses whether the institution is looking into all the quality aspects of these values, whether they are contributing towards, they are having activities or programs or something to contribute to national development, how they are preparing their children for global competency, how they are, what are the measures, mechanisms that they have to strengthen the value system, how they are making their children technology friendly and technology savvy, and how they are motivating them to be excellent human beings, and the higher education institutions to be centers of excellence. So the accreditation, what are the benefits of accreditation? The first one would be that it validates the institution's quality standards. It encourages institution for self-improvement. जब हम अपनी ही एनालिसिस करते हैं, स्वयं का अवलोकन करते हैं, स्वयं का आकलन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर किन चीजों को हम और उभार सकते हैं, हमारी शक्तियां क्या है, कुछ कमियां क्या है, उन कमियों को हम और अच्छा बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये हम इस चीज के लिए अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक सेल्फ ऑडिट करने की जरूरत है। सेल्फ मतलब मैं नहीं, मैं तो हूं ही इंस्टीट्यूशन का पार्ट, बट द इंस्टीट्यूशन मस्ट अंडरगो अ सेल्फ ऑडिट। देन अच्छे अगर ग्रेड्स मिलते हैं इंस्टीट्यूशन को, तो बच्चों को जॉब मार्केट में भी उनका लेवल बढ़ जाता है। पेरेंट्स the admissions भी ज्यादा होंगे, because that institution will be top ranking institution,
and that institution will be sought after. Then it जो जहां से हमें फंडिंग एजेंसी से पैसे मिल सकते हैं इंस्टीट्यूशन का और इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो सब हमें उपलब्ध हो सकता है. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं of the accreditation. So these are the quality indicators on the basis of which actually the accreditation process takes place. The backbone, in fact, the backbone of the assessment and accreditation process are the quality indicator framework, QIFs कहते हैं इनको, the 7 criteria. किसी भी higher education institution, whether it is an open university, whether it is dual mode university, whether it is a simple university, whether they are affiliated colleges, whether they are autonomous colleges, all activities of the higher education institutions are encompassed in these 7 criteria that are on the basis of which a grading is developed for the institution. The quality is assessed. And we find that there are, I don't know, sky is the limit. The activities that we can do under the banner of each of them. Now, each of these criteria, the curricular aspects, teaching, learning, evaluation, research, innovation and extension, infrastructure and learning resources, student support and progression, governance, leadership and management, institutional values and best practices, each of them have key indicators. And to delineate further, there are metrics which are qualitative and quantitative. Qualitative metrics which ask for numbers, or documents, data templates, etc. Qualitative, where you can describe in the number of words given by the NAAC manual, you can describe that particular activity or particular, in the institutional practice policy, you can describe in that. So that's how the accreditation framework goes on, which will be discussed in detail in the next session. So these are some of the areas which I would like to bring to your notice, where we can maintain quality, we can enhance the quality, maintain quality, ensure quality, and sustain quality, and then enhancing. Every time we have to go a step higher. That is what is excellence. So the degree of excellence is quality. So how to climb that ladder? What all things we can do criteria wise? In criteria 1, we can have value added courses. I can give you an example. A graduate in geography or geology or earth science or say environmental studies or engineering can do a course on geospatial science. Now this will fetch him a lucrative job, a dream career. It will open up many avenues of career for him. So these similarly, so many, so value added. So whatever he has done, he can further add to it through these courses. There are n number of value added courses, but those have to be taken under as per the need of that place, the requirement of the children, the levels of children, all looking to that, you can decide what value added course, the job availability, all that must be taken into consideration when we go for value added courses. Then there are add-on courses, whatever is there with them, add to that. So add-on courses like BCom children can do on Tally, they can do insurance, they can do tax. So such things will, give them a boost when they go for job, when they enter the job market. Then skill development courses. Now I'm looking after the NAAC as the assessment part in the state of Madhya Pradesh. And many colleges are presently going the team visits, and
I am closely watching the recommendations that the teams are giving. So they are asking for value-added courses, add-on courses, skill-based courses, job-oriented courses. Skill-based means occupational skills. You have to make your students worthy citizens so that they can be self-reliant. आत्मनिर्भर बनाना है. आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्किल हमें देना होगा, उनकी लाइकिंग के, उनकी एप्टीट्यूड के हिसाब से स्किल देना होगा उनको, और स्किल में उनको बिल्कुल, they must become the best in that. That is how we can achieve quality. Then job oriented courses, looking to the need of the place wherever the institution is located, the resources available, the funds where you can muster all facilities. Depending on that, the job oriented courses can be started in our institutions. The next point is the cross-cutting issues. Now, very important point, which we don't much bother, but NAAC bothers a lot. There are issues like professional ethics, environment and sustainability, gender equity, and human values, which NAAC looks into how you have incorporated it into the curriculum. What are you doing for these things? See, these are issues which are relevant to each student, each and every student, irrespective of the program, the course that the student is doing. So it is very important for every child to have professional ethics. Professional ethics में एक चीज मैं बताती हूँ, time theft. हम ऑफिस में तो बैठे हैं, लेकिन हम बैठ करके अपने घर का काम कर रहे हैं. So is it not time theft? We are not sincere, we are not punctual, we are not regular. ये सब चीजें कहाँ से आता है? Punctuality, regularity, sincerity, dedicated, committed. ये सब चीजें professional ethics में बहुत important है, और ये हम कैसे अपने courses में include कर सकते हैं? हम लोग, we can have short courses, you can have guest lectures, you can have quiz, you can have some competitions, you can devise many ways in which these cross-cutting issues are delivered to the child before the child leaves the institution and enters the society. So you have not only वो जो हमारे पास syllabus है, curriculum, वही नहीं है. We have to bother about the overall development of the child. Feedback is very important. On all the criteria, in fact, I have written it at one place, but in all the criteria, it is important to get feedback, because feedback, the four processes, the collection of feedback, analysis of feedback, action taken on that, and then you have to host it on the website. This gives you a very good, as I said, reviews and how to review yourself and monitor. Now, when you go to a hotel, या हम कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हम उसकी रेटिंग देखते हैं ना, ऐसे ही हमारा ग्रेड है, और साथ ही हम रिव्यूज पढ़ते हैं. अगर किसी ने एक दो लोगों ने भी अगर रिव्यू अच्छा नहीं लिखा है, तो हमारा इंप्रेशन एकदम खराब हो जाता है. तो ऐसे ही उसको सुधारने के लिए घर के अंदर ही हम उसको सुधार लें, उसके लिए ये फीडबैक सिस्टम है. तो हमें अपने इंस्टीट्यूशन का डेवलप करके इस पर जरूर काम करना चाहिए. स्टूडेंट से लेना चाहिए, फैकल्टी से लेना चाहिए, हमारे बच्चे जहां प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के लिए जाते हैं उनसे लेना चाहिए, और एलुमनाई से भी लेना बहुत ही फायदेमंद होगा. तो इन चीजों का हम क्राइटेरिया 1 में ध्यान रखेंगे. क्राइटेरिया 2 में हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लोग हर सेक्शन से होते हैं. टॉप सेक्शन से, वीकर सेक्शन से, मीडियम सेक्शन से, ऐसे अलग बैकग्राउंड से, सोशियो इकोनॉमिक पुअर बैकग्राउंड से आते हैं. कुछ बच्चे फिजिकली डिसेबल रहते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में वीक रहते हैं. You have the social, culturally different background से आते हैं. So you have a diversity of students. Now you have to cater to all of them. हम लोग कहीं जाते हैं
So you find that there is facility for all types of people. Similarly, you also are building the future of this nation. So you also must be prepared to cater to the student diversity. The teacher profile also, we need well qualified teachers. हमारे पास रहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो हाईली क्वालिफाइड रहते हैं सब, तो उनकी क्वालिफिकेशन को, जैसे मैंने उस एक्स की बात बताई थी, उस लकड़हारे की बात बताई थी, कुल्हाड़ी को बार बार उसको पहना करते रहना होता है, वैसे ही टीचर्स ऑल्सो मस्ट कीप अपने जो क्वालिफिकेशंस है उसको और अपस्किल कैसे करना है ये हम ढूंढते रहें और टीचर प्रोफाइल भी हमारा बढ़ते रहे। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। अब वो ट्रेडिशनल जो टीचिंग टेक्निक्स है वो सब एक तरफ हो गया है। अब बच्चे चाहते हैं इंटरेस्टिंग वे में क्लास हो, वन वे नहीं है, इट हैज टू बी टू वे, इंटरैक्टिव, पार्टिसिपेटिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ग्रुप डिस्कशंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल्स, फील्ड वर्क, ये सब तरीके से हम लोग अपने बच्चों को एजुकेट, जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा। इट हैज टू बी ब्लेंडेड टीचिंग। अब बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से भी हम ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं, आईसीटी टूल्स के माध्यम से भी पढ़ा रहे हैं, तो एक आईसीटी को हम टीचर ना बना दे, क्योंकि आईसीटी इज नॉट अ टीचर, the technology is not a teacher, it is to some extent it is an aid, but the teacher is you, आपको उसका हेल्प लेकर के, so it has to be a blended learning, उसकी भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, इसके लिए हमें भी अपने को अपस्किल करना होगा, बच्चों को भी उतनी ही उसकी जो फायदे हैं वो सब देना होगा। सो होलिस्टिक इंटरनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, जो बच्चे पढ़ते हैं वो इंटरनलाइज करें। हम देखते हैं कि बच्चों को अगर हमने एग्जाम अभी लिया है और 90% मिला, एक 15 दिन बाद वही पेपर बच्चे से सॉल्व कराइए, बच्चे को कुछ नहीं आता होगा, एक फॉरगेटिंग कर्व है, वो बताता है हमको कि हमने वो जो पढ़ा था वो केवल मार्क्स के लिए पढ़ा था। So that should not be the case. It has to be internalized. So learning by doing has to be promoted. जो हम करते हैं, जो हम करके देखते हैं, वो हम भूलते कभी नहीं भूलते, वो हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। So what I hear, I forget. What I see, I may remember. But what I do, I understand. उसके बाद आते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक्स। हम लोग सीसीई वगैरह कराते हैं, हमारे यहाँ एग्जाम्स होता है, तो ये जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको हम कहते हैं, उसपे हम बच्चों को मार्क्स भी देते हैं। इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नैक देखता है कि आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं क्या। कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि जब तक बच्चा उस पेपर में पास नहीं होता तब तक उसको उस पेपर हल करवाते रहेंगे, नहीं, इट हैज टू बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज इस पोर्शन में टेस्ट है, एक हफ्ते बाद अगले पोर्शन में टेस्ट है, उसके बाद उसके अगले पोर्शन में टेस्ट है। बच्चे को कंटिन्यूअसली पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहना और इवैल्यूएट करते रहना, और उस बच्चे को हम समझ पाएंगे कि वो कहाँ खड़ा है, उसको कहाँ परेशानी हो रही है, वेयर इज इट लैकिंग, वेयर इट हैज नीड सपोर्ट। सो दैट कंटिन्यूअस process of evaluation has to be undertaken. MSc के क्लासेस में हमने एक बार बुक रिव्यू पर करवाया था, रिसर्च पेपर, रिसर्च लिटरेचर को कैसे सर्वे करते हैं, बुक रिव्यू कैसे लिखते हैं, ऐसे जो टेक्निक्स बदल बदल कर भी हम अपने बच्चों को इसमें हम ट्रेन कर सकते हैं और इवैल्यूएशन के प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर मीनिंगफुल बना सकते हैं। ट्रिपल एस के बारे में अभी नेक्स्ट सेशन में आप बहुत अच्छा सुनेंगे, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स आर द स्टूडेंट्स, दे हैव टू बी सेटिस्फाइड विद the stuff that we are giving them, the process that we are undertaking in the institution. So they have to be satisfied with the teaching learning process, with the infrastructure, with the curriculum delivery, with the other things that we are giving them। के साथ में
हम खाना खाने भी बैठते हैं तो हम लोग अपनी थाली में कितनी चीजें सजाते हैं, तो वैसे ही एक केवल रोटी या केवल चावल नहीं खाते हैं. We have so many things. We have a vegetable, we have a dal, we have achar, papad, salad, so many things. And then only the food becomes interesting. So are we giving them all that? That has to be ensured. And then only that student satisfaction survey becomes very important. And all the more important is the learning outcome, program outcome, course outcome, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. हमारे बच्चे जब बीए या बीएससी बीकॉम कुछ भी करके निकलते हैं तो हम उनके अंदर क्या चाहते हैं, वेयर शुड दे स्टैंड, वो किस चीज के लिए वो उनको हम तैयार कर रहे हैं, वो आउटकम हमें पहले डिफाइन करके उसको चेज करना चाहिए. तो इंस्टीट्यूशन का जो विजन स्टेटमेंट में मस्ट हैव द प्रोग्राम आउटकम्स को हम वहां पर बिल्कुल हाईलाइट करें कि हम अपने बच्चों के अंदर क्या क्या चीजें चाहते हैं. क्रिटिकली थिंक, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, हम उनको प्रोफेशनली स्ट्रांग बना रहे हैं, वैल्यू सिस्टम उनका स्ट्रांग कर रहे हैं, उसके साथ उनके सब्जेक्ट नॉलेज में हम उनको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बैठ सकते हैं, उस लायक तैयार कर रहे हैं. ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट आउटकम्स में झलकना चाहिए. एंड दैट मस्ट ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द विजन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. Then criteria 3, research policy होना जरूरी है, publications, projects अपना होना जरूरी है, एक research culture हमारे institutions में आना चाहिए. The faculty members must be promoted, encouraged, motivated to write books, articles, columns. उनके जो awards और recognition है वो भी बहुत important है, because NAAC gives marks for every small things. अपने को लगता है कि ये चीज किस काम का है, नहीं. जैसे मैंने कहा कि जितनी एक्टिविटीज स्टेक होल्डर्स द्वारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होते हैं वो सब एनकम्पास करता हुआ ये NAAC का प्रोसीजर है. Then funds for research promotion, ये हमें जनरेट करना चाहिए, सीड मनी देना चाहिए for promoting research, to begin research, startup, incubation centers, collaborations अपने यहाँ होना चाहिए with अपने अंदर स्टेट के अंदर की अच्छी जगह इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ और यूनिवर्सिटीज के साथ. जहाँ जो चीज हमें अच्छा मिलता है उससे हमें कोलैबोरेशन बनाए रखना चाहिए. एक नेटवर्किंग, इंटर एंड इंट्रा नेटवर्किंग बहुत जरूरी है. MOUs आप बना सकते हैं सबके साथ, जिनके साथ हमें लगता है कि हमारे साथ हमारा लेन देन हो सकता है, उनके साथ MOUs अपन डेवलप करें. कंसल्टेंसी जो हमारे यहाँ की खूबी है उसको हम दूसरों को भी उपलब्ध कराकर अपने इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. दैट इज कंसल्टेंसी. Then extension activities are also very important, because extension activities means that community services. देखिए जहां पर रिसर्च थोड़ा कमजोर है, किसी तरह हम रिसर्च को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ उन्होंने इनोवेशन ऑफ इकोसिस्टम रखा है, उसके साथ ही उन्होंने एक्सटेंशन एक्टिविटीज रखा है. तो कम्युनिटी सर्विसेज से हम बच्चों के अंदर सेंसिटिवनेस जो हमको सोसाइटी ने इतना दिया है वो हम कैसे हम उसका उपकार दूसरों तक पहुंचाएंगे, उसके लिए हम क्या परोपकार करें. तो सेंसिटिवनेस टुवर्ड्स कम्युनिटी इश्यूज मस्ट, मतलब the institution must affiliate with different groups or individuals, and they must एक structured एक program बनाना चाहिए अपना, तभी हम ये एक्सटेंशन एक्टिविटीज करना चाहिए. केवल हम जाकर के एक ब्लड डोनेशन कैंप करके आ गए, या हम खाना बांट के आ गए, या हम कपड़े बांट के आ गए, वो भी पुराने कपड़े जो कि हमारे घर में ज्यादा हो रहे थे तो खराब जब हो रहे थे तो हमने जाके बांट के आ गए. दैट इज नॉट एक्सटेंशन एक्टिविटी. एक्सटेंशन एक्टिविटी मीन्स देयर मस्ट बी अ स्ट्रक्चर्ड program for that, and it must benefit both the parties. I emphasize, I repeat, both the parties, the student, or the teacher or the institution, as well as to the people to whom you are going. दोनों को benefit करना चाहिए. वहां पर क्या changes आया, how the society has benefited, what are the changes that have happened, वो हम
हाईलाइट करें, साथ ही हमारे बच्चों के अंदर उसके कारण क्या परिवर्तन आया, क्या सेंसिटिवनेस आया, वो हमको हाईलाइट करना चाहिए। सो एक्सटेंशन एक्टिविटीज को हम ऐसे ही ना लें, इसमें हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, साथ ही हम बहुत अच्छा एक कार्य भी करेंगे, परोपकार करते करते अपना भी उपकार हम करेंगे। सो इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी, इट हैज टू बी डेल्ट विथ very seriously. Then the next criteria, where infrastructure and facilities have to be provided, उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने पास जो भी फंड्स हो या जहां जहां से हमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से या प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं या रूसा से, सब जहां जहां से जो हमें फंड्स मिल सकता है उसको हम यूज करें बढ़ाने के लिए। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना भी चाहिए, जो है उसको हमें मेंटेन भी करना चाहिए, जो है उसका ऑप्टिमल यूज भी करना चाहिए। ऐसे ही आईसीटी एनेबल्ड फैसिलिटीज को भी अपना बढ़ाना चाहिए। लाइब्रेरी, ई सोर्सेस और लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, ई जर्नल्स है, ई रिसोर्सेस है, जो अपने रिमोट एरियाज है वहां तक भी ये जो फैसिलिटीज हमारे बच्चों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं और कैसे उसको कर रहे हैं, ये NAAC जो है एसेस और एक्रेडिट करते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ कैंपस कॉरिडोर क्लासरूम, 3 C's याद रखिए, कैंपस कॉरिडोर क्लासरूम, इन तीनों के मेंटेनेंस भी इसी क्राइटेरिया में हमें बहुत ध्यान से करना है। Then criteria 5 talks about student progression. हमारे बच्चे जो है 12th स्टैंडर्ड में 95% पा करके आए और जब वो BA BSc करके निकल रहा है तो क्या वही उतने ही लेवल पे अभी भी है और उतने बच्चों ने पास कर लिया, सब बच्चों ने एक जैसे अच्छे से परफॉर्म करके निकले, या हमने स्लो लर्नर्स और एडवांस लर्नर्स को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्राइटेरिया 1 में भी है ये कि हमने क्या मेजर्स किए, कैसे हमने पहचाना कि ये बच्चे हमारे होशियार है, ये बच्चे हमारे थोड़े कमजोर है। कमजोर बच्चों के लिए हम रेमेडियल क्लासेस करेंगे, उनको और क्या क्या फैसिलिटीज, नोट्स दे सकते हैं, उनको पढ़ने के लिए हमारे जो होशियार बच्चे हैं उनके साथ हम उनकी दोस्ती करा सकते हैं, उनका ग्रुप्स बना के अपने क्लासेस को करवा सकते हैं। या और साथ में जो हमारे एडवांस लर्नर्स हैं वो तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और दीजिए हमको, और दीजिए, ऐसे तैयार बैठे हैं, तो उनको हम और देने के लिए कोचिंग्स कर रहे हैं क्या, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ उनको बढ़ा रहे हैं क्या, क्या क्या कौन से उनकी एप्टीट्यूड को देख करके वो किस तरफ उनको जाना चाहिए उसके लिए काउंसलिंग दे रहे हैं क्या। ये सब हमारे स्टूडेंट प्रोग्रेशन फैसिलिटीज, सपोर्ट, स्कॉलरशिप्स है, मेरिट स्कॉलरशिप्स है, कुछ अलग तरह के उनके लिए उपलब्धता, हम बुक्स है, स्टेशनरी है, ये क्या क्या हम उनके लिए उपलब्ध कराते हैं। साथ में वो लोग जो परेशानियां, जो ग्रीवांसेस हैं उनके, उसको हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं। कुछ बच्चे रैगिंग से परेशान होंगे, कुछ हरासमेंट अलग अलग तरह के होंगे, उससे परेशान होंगे। उन चीजों से हम उनको बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं वो हमको यहाँ पर जरूर अपने महाविद्यालय में या यूनिवर्सिटी में या जो भी इंस्टीट्यूशन में जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। एंड वी मस्ट डू मेजर्स, जैसे हमने सजेशन बॉक्सेस रखा, उन सजेशन बॉक्सेस को रखने से हमारा काम खत्म नहीं होता। ग्रीवांस रिड्रेसल सेल का एक कमेटी बनाई हमने, और उस सजेशन बॉक्सेस में जो सजेशंस आ रहे हैं उसको एक रेगुलर इंटरवल में एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल के हिसाब से उसको खोलते हैं, खोल करके उसमें जो सजेशंस आए हैं वो अच्छे हैं तो उनको हम क्या क्या कर सकते हैं, उस पर हमने क्या काम किया, एक्शन टेकन, उन बच्चों को इन्फॉर्म भी करते हैं कि हमने ये काम किया है आपके लिए। तो इस तरह से उसको एक मूर्त रूप देना बहुत जरूरी है। हमारे महाविद्यालय के जो पूर्व छात्र हैं, एलुमनाई, they are a treasure that we have, they are a workforce that we have for the institution, and in fact they are the अपने जो bugles है, हमारी जो क्वालिटी के बारे में बात करने वाले, हमारे महाविद्यालय के ख्याति को फैलाने वाले लोग हैं। तो उनको हम अलग से भी उनका एक रजिस्टर्ड बॉडी बनाएं, उनकी मीटिंग्स करवाएं, उनसे पूछें कि आप सजेशंस लें, इंस्टीट्यूशन का जो विजन मिशन स्टेटमेंट जो बनता है उसमें उनका पार्टिसिपेशन लें, इंस्टीट्यूशन के कौन कौन से कार्यों में उनका हेल्प हमको मिल सकता है
उसमें हम दें, ये सब चीजों में हम उनको इन्वॉल्व करें ताकि महाविद्यालय में क्वालिटी इनिशिएटिव्स बढ़ाते चले जा सकते हैं हम, और जो और अलग अलग नए तरीके से हम कुछ नवाचार भी इंक्लूड कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करवाते हैं, हम अपने महाविद्यालय में भी हम अरेंज करते हैं और दूसरी जगह भी हम बच्चों को भेजते हैं। तो उसके लिए हमने क्या कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स किए, कितने बार हमने बच्चों को उसका मौका दिया उनके टैलेंट को बाहर आने का, उनकी एप्टीट्यूड को निखारने का, हमने क्या क्या एफर्ट्स करे, वो भी हम NAAC हमसे जानना चाहते हैं। क्राइटेरिया 6 में गवर्नेंस से रिलेटेड है ये पूरा, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से। तो फैकल्टी को और सपोर्ट स्टाफ को हम उनके जो कुल्हाड़ी है उसको और तेज करने के लिए क्या क्या करते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या हम करते हैं, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग्स उनको देते हैं, ICT जो लिटरेसी है उसके लिए हम देते हैं, उनके साथ में वेलफेयर मेजर्स हैं, ऑटोनॉमी है। IQAC के बारे में कहना चाहूंगी, जिन महाविद्यालय में IQAC गठित है, एक बार NAAC हो चुका है तो IQAC गठित होगा। जितने भी कार्य होता है महाविद्यालय का या इंस्टीट्यूशन का, that has to be through the IQAC. The chairman is the principal or the head of that institution, and IQAC जैसे अभी यहाँ पर हमने भोज यूनिवर्सिटी में इसको सीका कहते हैं, सेंटर फॉर जो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, तो दैट इज द सेटअप फॉर a continuous quality maintenance, ensuring, enhancing, sustaining quality. तो quality initiatives सारे इनके थ्रू ही होना चाहिए, सीका के थ्रू या IQAC के थ्रू, और कमिटीज बनाना, नए नए चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रेरित करना, हर कमेटी को धक्का लगाते रहना कि आपको ये करना है, आपके यहाँ ये खूबी है, आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। तो दिस IQAC जो ग्रुप है वो लोग एक क्वालिटी ग्रुप कल्चर, एक सर्कल है जिसको पूरा काम करते रहना चाहिए, और अपने इंस्टीट्यूशन के जो इनिशिएटिव्स हैं उसको आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छे तरीके से they have to spearhead the entire process of quality initiatives. उनके थ्रू ही IQAC का एक मोटो हो सकता है, एक लोगो हो सकता है, एक टैगलाइन हो सकता है, और उस टैगलाइन पर आधारित ही महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी का पूरा कार्य हो, जिससे IQAC को भी बहुत उसमें एक मोटिवेशन महसूस होता है कि जब उस बैनर के तले कुछ कार्य महाविद्यालय में होता रहता है, तो महाविद्यालय का हर कार्य, हर क्वालिटी इनिशिएटिव हैज टू बी थ्रू द IQAC. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितना है, ऑडिट्स हैं, जो भी फाइनेंस जो इंटरनल ऑडिट वगैरह होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, जो फीस कलेक्शन होता है, उन सब का एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। FMS अपना जो है वो दुरुस्त होना चाहिए, और वो भी इस क्राइटेरिया में हमें करते रहना होगा। ऐसे ही अपने महाविद्यालय का SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, तो इन चीजों पर हमको देखते ही रहना होगा कि हमारे महाविद्यालय की शक्तियां क्या है, क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं जिन पर हमें काम करना है। कोई वीकनेस करके कुछ होता नहीं है, दैट इज ओनली OFI's opportunity for improvement. तो हमको इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है, कार्य करना है, मेहनत करना है। देन अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, अवसर क्या क्या हमारे पास है जो जिनका हमें लाभ लेना चाहिए, और चैलेंजेस, चुनौतियां क्या है। तो वो अभी हमने जैसे बहुत सारी चुनौतियों के बारे में मैंने कहा, लेकिन दे आर ऑल अपॉर्चुनिटीज डिस्गाइज्ड एज चैलेंजेस। वो हमको वेश बदल करके हमें बताते हैं कि हम चुनौती है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर हमारे लिए अवसर ही अवसर रहते हैं। तो उसका हमें लाभ लेते हुए
स्वॉट एनालिसिस अपने महाविद्यालय का एक बार करना करके खत्म नहीं होता, बार बार पीरियोडिकली करते रहना चाहिए कि अभी थोड़ी सी परिस्थिति बदली तो स्वॉट एनालिसिस किया, स्वॉट एनालिसिस करके जो वीकनेस वाली एरियाज है, अपॉर्चुनिटीज वाली एरियाज है, उन पर हम कार्य करें, उस पर स्ट्रैटेजिक प्लान बनाएं कि हम कैसे आगे महाविद्यालय को ले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्लान। तो अपना ISDP जो है वो तैयार करें, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्लान, कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजों की जरूरत है, कहाँ से आ सकता है, कहाँ कोशिश करना चाहिए, हमारे पास ICT के लिए हमें कहाँ कोशिश करना चाहिए, स्मार्ट क्लास है या लैंग्वेज लैब है या E-लर्निंग रिसोर्सेस है, वो हमको कहाँ से मिल सकता है, लीज लाइन कॉलेज के नाम से होना चाहिए, तो वो कहाँ से आ सकता है, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फंड्स हमारे पास कितने पैसे हैं और कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं पैसे, जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम जुडिशियसली कैसे यूज करेंगे, ऑप्टिमल यूज कैसे करेंगे, ये हमको प्लानिंग करना है। और उस स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट प्लान को 5 साल का 10 साल का बना करके उसको परस्यू भी करना है, उसको चेज करना है, बना करके फाइल में रखना नहीं है, उसको कॉन्स्टेंटली देखते रहिए, डिस्कस करते रहिए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो हमें उसको जब तक हम उसको पा नहीं लेते तब तक हम उसको उसके पीछे लगे रहना चाहिए। इंस्टीट्यूशन का विजन और मिशन होना भी बहुत जरूरी है। विजन मतलब द इंस्टीट्यूशन मस्ट, जैसे मैंने कहा, प्रोग्राम आउटकम्स, जो प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं उससे हम बच्चों के अंदर क्या चाह रहे हैं वही हमारा विजन है, और उसको करने के लिए हमने क्या प्लान बनाया है वो हमारा मिशन है। तो और मिशन फिर 30 साल 35 साल पहले बना हुआ विजन और मिशन में परिवर्तन तो आ जाएगा, क्योंकि समय बदल रहा है, परिवर्तित हो रहे हैं सिचुएशंस, उस हिसाब से आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की सिचुएशन के हिसाब से हमारे बच्चों के नीड्स की जरूरत, जो जरूरतों के आधार पर, नीड्स के आधार पर हमें क्या चीजों को परिवर्तित करना है, कैसे उसको बदलना है, वो एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 10 व्यक्ति इस विजन और मिशन स्टेटमेंट को नहीं बना सकते। उसके लिए आपको एक कमेटी बनानी होगी। कमेटी ने पहले कुछ बनाया, उसको फिर डिस्कस किया, स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डिस्कस किया, एलुमनाई को इन्वॉल्व किया, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, और सोसाइटी में हमारे इंडस्ट्री से कुछ अगर जुड़े हुए लोग तो उनसे हमने डिस्कस किया। सबसे डिस्कशन के बाद एक जो निष्कर्ष निकलता है उसको तैयार किया, उसके आधार पर हमने अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाया, बना करके फिर हमने फाइल में बंद करके रखा, ऐसा नहीं, उसको हमने विजन जब बना लिया, सबको बताना भी जरूरी है विजन और मिशन, कि हमारे महाविद्यालय का ये विजन है और ये मिशन है, कहाँ कहाँ बता सकते हैं हम, सोशल मीडिया पर हमारा फेसबुक पेज है तो उस पर बताइए, महाविद्यालय के सब दीवारों पर जहां जहां उसके पोस्टर्स लग सकते हैं वो बना करके आप डिस्प्ले कीजिए, बच्चों को उससे अवगत कराइए, आपके स्टेक होल्डर्स दूसरे हैं उनसे अवगत कराइए, ताकि सब मिल करके एक परिवार जैसे इस कार्य को, एक्रेडिटेशन के कार्य को एक बिलोंगिंगनेस के साथ एक साथ मिल करके हम इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से संपन्न करवा पाएंगे। क्राइटेरिया 7 में वी हैव द वैल्यूज। वैल्यूज के बारे में मैं काफी आपसे बात कर चुकी हूँ। जो कोर 5 वैल्यूज है, सत्य, सदाचरण, प्रेम, अहिंसा और लव, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इन सब 5 वैल्यूज को हम कैसे अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे? पीस, लव, नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड राइटियसनेस, इनको हम अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, इसका हम और पहुंचा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं हम। जैसे हम हमारे नेशन के प्रति बच्चों के अंदर प्रेम भरने के लिए, नेशनल फीलिंग के लिए, हम स्वदेश के प्रति जो प्रेम है उसको बताने के लिए हम नेशनल फेस्टिवल्स को मनाते हैं। उस समय हम जो कार्य कर रहे हैं उसका हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके रखें। अर्थ डे मनाते हैं, एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, साइंस डे मनाते हैं, ऐसे कौन कौन चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो इन सब का वैल्यूज ही तो हम बच्चों के अंदर
स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इन सब के माध्यम से, लेकिन हम केवल एक नाम भर के लिए मनाने का नहीं सोचें, उसको हम थोड़ा सा सोच करके उसका प्लान करें कि इसके सेलिब्रेशन से बच्चों के अंदर हम क्या क्या चीजें चाह रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स। तो हम बच्चों के अंदर क्या चाहते हैं, क्या बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस तरह से उसको प्लान कीजिए और तब बच्चों तक पहुंचाइए। Distinctiveness, every institution is distinctive, every institution is special, every institution has something very, very, different from others, so that has to be highlighted. हर इंस्टीट्यूशन के लोग, वहां का तौर, उनके प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, ये सब डिफरेंट है। तो अपने पॉलिसीज क्या क्या है? डू यू हैव डिफरेंट पॉलिसीज? डू यू हैव अ वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, रिसर्च पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस पॉलिसी? अलग अलग पॉलिसीज है हमारे पास। तो अगर पॉलिसीज है तो लिखा हुआ है, उसकी कमेटी है और लिखा हुआ है, उसके हैंडआउट्स अपने पास है क्या, जो हम किसी के मांगने पर दे सकते हैं? हमारे पास डिफरेंट ऑडिट्स होते हैं क्या? AAA एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट, ग्रीन ऑडिट, एनर्जी ऑडिट और एनवायरमेंटल ऑडिट, और बहुत सारे ऑडिट्स और हैं, जो जेंडर ऑडिट है। ऐसे ऑडिट्स हम कराते हैं क्या हमारे इंस्टीट्यूशन का? और करवाना चाहिए। ऑडिट से हमको पता चलता है कि हम कहाँ हैं, कितने कहाँ खड़े हैं और हमें कितने ऊंचाई तक और पहुंचना है। तो ये सब क्वालिटी पैरामीटर्स है जिसको बार बार हम देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, इसको रिन्यू करते रहेंगे, तो हमारी क्वालिटी एनहांस होकर के सस्टेन्ड, मेंटेन्ड रहता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति भी हम बच्चों को बताना चाहिए। वोट क्यों करना चाहिए, कम्युनिटी सर्विसेज क्यों करना चाहिए, उससे हमको बच्चों को क्या फायदा है, बच्चे किस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, उनका समाज में जब वो कदम रखेंगे तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, महाविद्यालय के अंदर उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। ये चीजें उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी केवल राइट्स के लिए ही ना फाइट करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझ करके उनके बिहेवियर को बहुत अच्छा करें। महाविद्यालय में ऐसे बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस होते होंगे, जैसे हर महाविद्यालय में कोई ग्रीन इनिशिएटिव है। अभी मैं कॉलेज को विजिट किया जहां पर पूरे कैंपस में इट इज अ जीरो बजट ग्रीन कैंपस है, जिसमें एक पैसा खर्च नहीं होता, एक भी पौधा खरीद के नहीं लगाया है। टीचर्स ने और बच्चों ने अपने अपने बर्थडे पर, टीचर्स अपने मैरिज एनिवर्सरी पर पौधे लगा करके उसका देखभाल करके, पानी भी वो लोग पानी की भी व्यवस्था करते हैं। पानी, रेन वाटर को उन्होंने हार्वेस्ट किया हुआ एक छोटा सा तालाब जैसे बना लिया है, तो साल भर उनके पास पानी रहता है। फिर सोलर एनर्जी के लिए भी उन्होंने किया है, सोलर पूरे पैनल्स लगा करके बिजली की बचत की है। तो और उसके कारण क्या होता है, उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छा है। पूरे कैंपस में तरह तरह की तितलियां, पक्षियां, मतलब वहां पर एक वातावरण अलग ही है, क्योंकि क्या, और ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं रहता। कितने टन्स ऑफ ऑक्सीजन जो महाविद्यालय के जितने लोग हैं उनके लिए सफिशिएंट यूज होने के लिए ऑक्सीजन भी जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए, एक कैंपस, ग्रीन कैंपस के कारण उन्होंने कितनी सारी चीजों को हासिल किया। तो ऐसे नवाचार हर महाविद्यालय द्वारा किया जाना है, कर रहे होंगे। उसको हम केवल उसको समझें, उसको हाईलाइट करें और उसके जो डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छे से करें। फोटोज हैं, उसकी वीडियोस हैं, उसके रिपोर्ट्स हैं, कमिटीज का जो है बार बार हम उसको कैसे सुधारते हैं, क्या क्या चीजों के माध्यम से हम उसको अच्छा रखते हैं, ऐसी चीजों की जो खूबियां हैं वो सब हम तैयार करेंगे, तब उसको प्रेजेंट करेंगे और तब हमको बहुत अच्छे से इसमें हम अपने महाविद्यालय को प्रोजेक्ट कर पाएंगे। So these are about the 7 criteria. So again, I come back to the same thing, that the challenges have to be seen as opportunities, because education is a very, very noble process that हमारे पास जो है, once, Gandhi ji visited an educational institution and he said, बहुत जब गांधी जी पहुंचे इंस्टीट्यूशन में तो बहुत तैयारी हुई वहां पर। उनका स्वागत करने के लिए बहुत, जैसे हमारे यहाँ कोई बड़े लोग आते हैं तो हम कितनी तैयारी करते हैं, ऐसी तैयारी हुई। गांधी जी हर क्लासरूम में गए मिलने,
बच्चों से बात की, बाहर निकले। फिर उन्होंने सब टीचर्स से मिलने का, स्टाफ मेंबर से मिलने का हुआ। तो सबसे कहा था कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो किसी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने पूछा, आप क्या पढ़ाते हैं? तो somebody said maths, somebody said chemistry, somebody said commerce, somebody said कुछ economics, political science। सब ये सब सुनते रहे गांधी जी। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, then who teaches children? बच्चों को कौन पढ़ाता है? अगर आप सब मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स को पढ़ाते हैं, आप केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं, आप फिजिक्स को पढ़ाते हैं, तब बच्चों को कौन पढ़ाता है? So our main objective is we are preparing the future of our nation. The future, the destiny of a nation is written in the classroom. So we have to remember that classroom में हमारे पास जो बच्चे हैं वो हमारे फ्यूचर है, और हम उनको जैसे चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। We are all sculptors. हमारे पास एक कोरा सा, हमारे पास एक संगमरमर का टुकड़ा है, उससे हम सुंदर सी कोई मूर्ति बना सकते हैं, या हम उसको बिगाड़ सकते हैं। पर हमारे पास बिगाड़ने का ऑप्शन कोई भी प्रेफर नहीं करेगा। सभी चाहेंगे कि हम सब मिल करके इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल करके अपने मेन स्टेक होल्डर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। Because we know that we are the most superior creation of the God. God sleeps in a stone, wakes up in a plant, moves in an animal, and thinks in man. Man ही ऐसा है, इंसान ही ऐसा है जो सोच सकता है, सोच करके महान से महान कार्य कर सकता है। और हम लोग सब मिल करके अपने महाविद्यालयों के एक्रेडिटेशन के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर नेशनल डेवलपमेंट के लिए तैयार होगा, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी के लिए तैयार होगा, टेक्नोलॉजी से भली भांति परिचित होगा, उसके अंदर एक्सीलेंस की क्वेस्ट होगी, और उसके अंदर एक बहुत ही मजबूत वैल्यू सिस्टम होगा जो कि 4-5 वैल्यूज सत्य, सदाचरण, प्रेम, शांति और अहिंसा पर आधारित होगा। With these words, I thank each one of you for giving me this opportunity to join this workshop, this on accreditation. I thank each one of the members of SICA from Bhuj University for making me a part of this important occasion and giving me this opportunity to speak to each one of you. Thanks a lot. Quality means doing it right when no one is looking at it. As Henry Ford has rightly said, so it invariably is a sustained and hidden process. Thanks a million, Professor Usha Nair ma'am, for your splendid inputs for our active participants. As ma'am has always been a learner throughout and still continues to be one, she has rightly threw light on every aspect of quality. Ma'am, you has aptly provided very practical and feasible solutions to different aspects of quality at all levels. You have also given your valuable inputs on quality accreditation based on your vast and enriched experience. Through your enriched inputs, you have contributed immensely for our participants. For that, on behalf of Center for Internal Quality Assurance, SICA, team of Madhya Pradesh Bhoj Open University, we are indebted to you, ma'am. Thanks again, and we look forward to you in our preparedness of NAAC accreditation. For our active participants, there is an announcement that on day 1 today, the second technical session will start at 3 p.m. when our expert is Dr. Narendra Chautalia ji, who is ex-director Knowledge Consortium of Gujarat. I appeal you all to connect in as many numbers as possible. The link will be same. See you then. Thanks to you all again. Jai Hind. Thank you, ma'am.
Thank you so much. Sign off कर लीजिए.